So we were solving this problem. A sailor is being rescued using a chair that is suspended, so whatnot. So we have read this statement. Now, yesterday we also drew free body diagram of this pulley. So to draw free body diagram of this pulley, we are given three cuts. Cut 1, cut 2 and cut 3. All the three strings are cut, and then tensions in those strings get exposed, and therefore those tensions are shown in this way. So you have to always understand, if this string is applying tension on the pulley, you have to show the arrow going away from the pulley. That means tension. If there is a compression, that means the arrow goes towards the pulley. So on the object under consideration, whether it is tensile or compressive is decided by the arrows. If arrow goes away from the object, it is tensile. If object comes towards the object, if the arrow comes towards the object, then it is compressive. Am I very clear, Vaibhav? Yes, sir. Okay. Now, so we have drawn this free body diagram, and then we were wondering, as this is coplanar and concurrent force system, we have only two equations in place: summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0. Summation fz equal to 0 is trivial equation, because that is 0, that is trivial identity 0 equal to 0. That is of no use because it does not involve any unknown. Do you agree with me? Yes, sir. Okay. Now there are three unknowns here: TAC, TCB, and tension in string CD. Three unknowns and two equations. How are we going to solve this? Was the question that we were asking ourselves. So then I told you that we will consider only this much part of the string. So I have already said that the pulley is frictionless. It is given in the problem that the pulley can roll over freely. That means it is frictionless. Do you agree with me? Yes, sir. If it is frictionless, we have already learned that tensions in two parts are going to be equal. So therefore, as the pulley is frictionless, we have TAC equal to TCB. Do you agree with me? Yes, sir. ये हमने पहले ही डिस्कस किया है. We are going to prove this when we learn friction topic on the unit on friction. But right now, believe me, if the pulley is frictionless and if the string passes over that pulley, both parts on both sides, both parts of the string do carry the same value of tension. Are you with me? Yes, sir. So I am going to call this as T. So let me denote this TAC by T and TCB also by T. So how many unknowns are there now? Only two unknowns. Can we solve for two unknowns by using two equations easily? So let us try and write down those equations. Now, Vaibhav, you are going to help me writing down these equations. Let us first write summation fx equal to 0. So what is the component of TCB in horizontal direction? Tell me. TCB cos 10. Yes. And is it positive or negative? Positive, sir. Yes, because it is towards right. And we are assuming towards right x is positive. So it is going to be T cos 10. Do you agree with me? Yes, sir. What is the horizontal component of TAC? T minus T cos 30. Great. So minus T cos 30. Happy? Yes. And what is the horizontal component of TCD? TCD, sir, will be minus TC cos 30. Right. TCD so cos minus TCD cos 30. Does 900 have any component in horizontal direction? No, sir. No. So therefore, this is equal to 0 is going to be the 0. first equation. Do you agree with me? Yes. There are two unknowns. One is T and another is TCD. So I will take T common here. So it is cos 10 Minus cos 30. minus cos 30. Are you with me? Minus Yes. TCD cos 30 equal to 0. This is equation number 1. Happy? Yes. Now let us look at equation number 2. For that, what I am going to do is summation Fy equal to 0. So when I equate summation of y components of all forces to 0, what is the equation that I get? What is the y component of this 900 Newton force? The 900 itself. Do you agree with me? So it is going to be minus 900. Fine. Then what is the component of this TCB?
T sine 10. And it is positive. Agreed? Positive. Plus Upwards. T Yes. sine 10. What is the component of this TAC? Sir, T sine 30. Yes, plus T sine 30. Plus. Yeah. And what is the component of TCD? Plus TCD sine 30. Great. Sine 30. This has to be equal to 0. 0. This is equation number. Now let us rearrange this equation. So can I write E common into bracket sine 10 plus sine 30? Are you with me? Yes, sir. Plus TCD sine 30 इक्वल टू 0. Ma- ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू Sir, 900. 900? Equal to 900. Equal to 9. Okay. Yeah. So this becomes equation number 2. Now can you solve these two equations on calculator easily? Your calculators Yes. are equipped to solve equations in 2 unknowns. So chalo solve karo. You have to go to equation mode, number of unknowns 2. So first equation A1 is cos of 10. Ensure that your calculator is in degree mode. Cos 30, then minus cos 30, then C1 is 0. A2 is sin 10 plus sin 30. You need not simplify this. You can directly substitute those values as A1, A2, sin 10 plus sin 30. And B2 is sin 30 and C2 is 900. So tell me, what do you get? Are you getting this? T is equal to 1212.56. Vaibhav, Yes, I do. Sir, do. you got this? Yes, sir. See, I can commit errors or calculation errors. So be sure that you have got it. Is it correct? Sir, let me cross check once. Yeah, please cross check. Don't just say yes. You have to cross check. Yes, sir, it's correct. Okay, great. So I got the independent confirmation. So we can move ahead. So have we found out tension in cable A, C, B? Yes. Have we found out tension in cable CD? Yes. So part A and part B of the problem are addressed. This is the answer to part A. This is the answer to part B. Are you with me, Vaibhav? Yes, sir. Yes. Okay. Now we are going to go to next few problems. So second problem requires that I should invoke something called as Lami's theorem. Means it can be solved using traditional way as well as Lami's theorem. So therefore we are going to delay this problem. We will solve this problem at the end. First of all, now let us start coming from the last problem. So let us solve this problem first. So can you read the problem statement, Vaibhav? Yes, sir. The Yeah. maximum allowable value of each of the reaction is 180 newtons. Neglecting the weight of the beam, determine the range of the distance d for which the beam is safe. राइट सो अब जरा देखो क्या क्या डेटा दिया है यू हैव बीन गिवन थ्री फोर्सेस 50 न्यूटन 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन दे आर एक्टिंग at the distance 450 mm apart. Do you agree with me? Yes, sir. Okay. चलो अब एक जरा चीज बताओ मुझे ये जो फोर्स दिखा है इस फोर्स के टाइप को बोला जाता है पॉइंट लोड क्या बोलते हैं हम इसको Point load. point load. Anyway, all the forces typically we show it as a point load. Do you agree with me? Yes, sir. Now let us take a digress. हम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे ही बट आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए इसलिए थोड़ा सा डायग्रेस लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट लोड इट इज द फोर्स दैट एक्ट्स थ्रू द पॉइंट डू यू एग्री विथ मी Yes, sir. व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉइंट टेल मी 0. पॉइंट हैज जीरो लेंथ डू यू एग्री विथ मी Yes, sir. व्हाट इज द विड्थ ऑफ पॉइंट
0. What is the thickness of point? 0. So is point nothing? Point is nothing. Do you agree Okay. with me? Yes, sir. Yes, sir. Now I am going to ask you a question. What is force? It is a physical quantity. Vector quantity है ना, physical quantity है. Yes, Agree sir. with me? So force is a physical quantity. That means it is something. Do you agree with me? Yes, sir. So now how can something be passed through nothing? Is the question. Are you with me? Yes, sir. So here we face the philosophical dilemma. Point is nothing. How can something pass through nothing? It is not possible. Are you with me? तो आपको ये Yes, sir. समझना है, whenever the length over which this 150 Newton is distributed is very small in comparison with total length. Are you with me? Yes, yes, sir. Then we idealize it as a point load. So point load, you have to understand it is idealization, and this idealization comes with its errors. So there are going to be certain errors introduced due to this idealization, but those errors are negligible, and hence we accept that. Are you with me? Yes, sir. So ये ध्यान में रखना. This was digress. This has nothing to do with the problem solution, but you have to keep in mind, even though you will see point loads in this entire course, these point loads do not truly exist. These are actually the area loads in which the area tends to zero. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान में रखना है. Now, let us try and solve this problem. तो क्या करना है? पहले तो रिएक्शन के बारे में कुछ तो बोला है. The reaction cannot go beyond 180 Newton. ऐसे बोला है ना? हाँ. And then you have to find out distance d. तो 450 plus 450 900 ये length constant है. As you go on changing d, as you go on increasing d, that means you are moving this support A inside. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. And as you go on reducing d, that means you are shifting this support A towards left hand side. Yes, sir. Are you with me? Now, Yes. determine the range of distance d for which the beam is safe. ऐसे बोला है. Are you with me? Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए पहले तो हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा. Yes, sir. So the first thing that we are going to do is we are going to draw free body diagram of the beam. किसका free body diagram बनाना है? Beam का. Why? Because the reactions are offered on the beam. So we need to draw free body diagram of beam. Are you with me? Yes, sir. अच्छा, जो बैच मेरे साथ है उनके लिए मैंने रिएक्शन ऑफ बीम्स में बीम का मतलब क्या होता है वो समझाया है. जो बाकी के बैच है उनका रिएक्शन ऑफ बीम ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा. That's what I believe. When we specifically solve problems on beams, at that time I will revise the definition of beam. But right now, believe me that this element I am going to call it as beam. Are you with me? Yes, sir. हाँ, चलो. Now I am going to draw this free body diagram of this beam, and I am going to call this point as C. इसको नाम दूंगा C. Are you with me? Yes, sir. So free the beam from all external agencies. So ये beam मैंने दिखाया. I have freed the beam from all external agencies. I call this point as C. I call this point as A, and I call this point as B. Are you with me? This is the line Yes, sir. representation of beam. I have freed it from all external agencies. कौन-कौन से external agencies है? ये support at A, support at B, and earth. These are the external agencies. Are you with me? Yes, sir. हाँ, चलो. अब जो कि इस बीम को एक्सटर्नल एजेंसी से फ्री किया है, तो एक्सटर्नल एजेंसीज क्या कर रहे होंगे वो भी तो दिखाना पड़ेगा. Yes, sir. ना, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज देयर एट ए. कौन से तरीके का सपोर्ट है? सर वो रोलिंग रोलर सपोर्ट. वेरी गुड. रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट कौन से तरीके का रिएक्शन ऑफर कर पाएगा? ओनली वन फोर्स रिएक्शन. वन अपवर्ड, सर. Yeah, so I am going to call this as RA. Are you with me? Yes, sir. तो ये एक ही अपवर्ड फोर्स रिएक्शन ऑफर कर पाएगा यहाँ पे, इसलिए वो दिखाया. कैन इट बी डाउनवर्ड? तो ये सपोर्ट डाउनवर्ड रिएक्शन ऑफर ही नहीं कर पाएगा. इस सपोर्ट के ऊपर डाउनवर्ड रिएक्शन ऑफर करने की नौबत अगर आए तो ये सपोर्ट इज गोइंग टू फेल. Yes, sir. आर यू विथ मी? तो वैसे दिखाया. नाउ व्हाट अबाउट बी? बी कौन से तरीके का सपोर्ट है बताओ? सर वो हिंज सपोर्ट.
पिन सपोर्ट, हाँ पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट ऐसे बोलते हैं इसको। ये कितने ठीक। रिएक्शंस ऑफर कर सकता है? इट कैन ऑफर 2 ऑर्थोगोनल रिएक्शंस। डू यू एग्री विथ मी? सर अप एंड डाउन। हाँ, only force reactions. Now I cannot call this as RB because at B we have two reactions. एक ही रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको मैं RB नहीं बोल सकता। तो मैं इसको बोलूंगा VB, vertical reaction at B, and HB, HB horizontal reaction। horizontal reaction at B. Do you agree with me? Yes sir। Okay. So now if I am calling it as VB and HB, why did I show VB upwards? ये सपोर्ट तो VB डाउनवर्ड भी ऑफर कर सकता है, बट दैट इज माय अजम्पशन. आई अज्यूम दैट VB is upward and HB is towards left. That is what my assumption is. Are you with me? Yes sir। Yes In yes। the end, if I get negative sign for HB or VB, I am going to say originally We'll assumed switch। sense of VB and HB is incorrect. Yes sir। Okay. Now, corresponding to Earth, I have freed the body from Earth, so I have to show the self weight of beam. Do you agree with me? Yes sir। पर क्या लिखा है देखो, neglecting the weight of the beam. B। That means self weight is negligible, तो self weight नहीं दिखाऊंगा. Are you with me? Yes sir। And these three forces, they must be applied by external body on the beam. Do you agree with me? Yes sir। So therefore I will have to show them. So ये दिखाने Yes। पड़ेंगे. तो ये हुआ 50 न्यूटन का फोर्स. Are you with me? Yes sir। Then this is 100 Newton force. Yes sir। And you have 150 Newton force here. Yes sir। So this is the free body diagram of beam, but it is not complete because I have not shown the distances. Are you with me? Yes sir। So ये distance हुआ D, ये distance हुआ 450 minus D. Yes sir। हाँ। और ये And distance then हुआ there's 450. 450। Are you with me? I have translated the Yes sir। distances in the format which is suitable to me. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ yes sir समझ। Okay. Now, tell me, if I apply summation fx equal to 0, equilibrium equations apply करूंगा. अब इसके ऊपर the beam is in equilibrium, it does not move along x direction, so summation fx has to be equal to Is 0. equal to 0। That implies Yes। what? That is going to tell hb equal to 0. HB is। Yes। समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरा कोई हाँ हाँ कंपोनेंट है ही दूसरा कोई फोर्स नहीं है सर, सब परपेंडिकुलर। करेक्ट. सो hb turns out to be 0. That's such a relief. एक रिएक्शन चला गया. यस सर एक हो Are you गया। with me? Yes, चलो ना, आई वांट टू फाइंड आउट RA. तो क्या करना पड़ेगा? RA अगर फाइंड आउट करनी है, आई विल टेक मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0. अब समेशन देखो, अब समेशन fy इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मैंने यूज किया, तो उसमें RA और VB दोनों आएंगे. Are you with me? हाँ सर। तो then that equation will not be sufficient to solve for both RA and VB. तो इंटेलिजेंट चॉइस लेना है. तो अब मुझे RA निकालना है, तो मैं क्या करूं? आई विल टेक मोमेंट्स अबाउट B इक्वल टू 0. सो देयरफॉर VB का मोमेंट वैनिश होगा, HB तो है नहीं, बाकी के सारे फोर्सेस नोन है, सिर्फ RA का मोमेंट अननोन रहेगा. डू यू एग्री विथ मी? यस सर यस सर यस। Therefore, what I am going to choose now is summation of moment about z axis passing through B equal to 0. Happy? यस सर। चलो अब ये इक्वेशन बताओ मुझे कैसे आएगा. What will be the moment of this 50 Newton force? सर -50। सिर्फ -50. कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो बताओ? यू आर टेकिंग मोमेंट अबाउट बी. बी हाँ। ये 50 कहाँ पे है? यहाँ पे है. What kind of moment does it produce? ये अपना क्लॉक नहीं नीचे Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। So पॉजिटिव आएगा, राइट? ओके हाँ पॉजिटिव। हाँ, और ये डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज द डिस्टेंस? 900। यस, सो दिस डिस्टेंस इज नोन 900. ये फोर्स कितना है अपना? 50 न्यूटन का है, तो इसका मोमेंट कितना आएगा? 50 into 900. हैप्पी? यस सर। और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉक। वेरी गुड. चलो नाउ टेल मी व्हाट नेक्स्ट. दूसरा कौन सा फोर्स है? आरए है सर। आरए। आरए कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है बताओ? 900 माइनस डी डी. तो समझ में? नेगेटिव होगा तो -50. -50 नहीं सॉरी -RA
into 900 minus D. Correct. क्योंकि this is I should have used the color code. 1 minute. It is going to cause clockwise movement. Are you Clockwise. with me? So Yes, therefore, sir. minus RA into 900 minus D. Agreed? Yes, sir. अब 100 न्यूटन का मोमेंट आएगा. 100 न्यूटन कहाँ पे 100 आएगा? यहाँ plus. पे. Yes, sir. So कितने plus डिस्टेंस 100 पे हो रहा into है? 450. हाँ, कितने डिस्टेंस ये पे हो रहा है? 450. 450. हाँ. सो ये एंटी क्लॉकवाइज है. Yes, sir. Positive. Therefore, plus Yes. 100 into 450. Yes. Is equal to 0. हाँ. और 150 का तो मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि 0 150 होगा. इज एक्टिंग एट बी. वीबी का B. मोमेंट नहीं आएगा. वीबी इज एक्टिंग एट बी और एचबी वैसे ही बेचारा 0 है तो उसका तो मोमेंट हाँ. आएगा ही नहीं. आर यू विद मी? सो Yes, देयरफॉर sir. दिस इज इक्वल टू 0. चलो अब यहां से कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ आर ए. आर ए की वैल्यू मिल सकती है. कैसे आएगी आर ए की वैल्यू? Sir, I will take RA this side. So 50 into 900 plus 100 into, चलो 50 into 900 plus 100 into 450. ये होता है 90,000. Are you with me? yes, sir. And this 90,000 divided by 900 minus D is going to be RA. Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ, sir. हाँ. चलो. Now what is the maximum value of RA? RA की maximum value कितनी है? 180 है. Yes, sir. RA cannot go beyond 180, so I will 180. equate it Yes. to the limiting value which is 180. समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या इसमें से मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी? Yes, sir. Yes. हाँ. So tell me what is D? Yes. 2 minutes. 90,000 divided by 90,000. 900. Don't simplify. You can directly write it on calculator equation. हाँ. सिंप्लीफाई करने में टाइम मत गमाओ. हमें पता है कि हमें इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, पता है पहले से. वो टेस्ट नहीं है अभी. So D turns out to be 400. Somebody confirm. करेक्ट है? Yes. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा वैभव. Yes, sir. For RA to remain below 180, should D be more than 400 or less than 400? Remain under, sir, more than. सोच हाँ, के sir. बताओ. Yes, sir. सोच के बताओ. Sir, देखो D left D से पकड़ रहे हैं ना? D बढ़ गया तो क्या होगा बताओ मुझे. If D increases, numerator is going to increase or decrease? Okay, हाँ. Increase. No, if D increases, numerator is going to decrease. Numerator, yeah. D Yeah. increases, denominator decreases. Sorry, denominator decreases. Denominator decreases means this value will be beyond 180. Yes, sir. Exceed So, 180. so we demand for RA to be for Within 400. RA to be less than 180, less than equal to 180. D must be greater than or Greater equal than to 400. 400. Are you with me? Yes, sir. हाँ. बाकी वैभव छोड़ के बाकी किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? अगर है तो पूछो. So I assume no one has a doubt. So now, what about RB? ये तो एक कंडीशन मिल गया. Now what about RB? VB. Sorry. VB के लिए क्या करेंगे आप? Now you apply summation Fy equal to 0. Yes, sir. Yes, If sir. I Yes, apply yes, sir. summation Fy equal to 0, कैसे लिखना पड़ेगा? -50 -100 -150. Do you agree? Yes. Yes, sir. -50 -100 -150. Are you with me? Yes, sir. Plus And RA plus VB. RA plus VB. RA तो कैलकुलेट किया है हमने. RA RA is कितना है? 180. No, RA is 180. not 180. RA is 90,000 by 900 by minus D. Okay, okay. हाँ, D can RA be की maximum value 180 है. RA is not 180. Are you with me? So it is 90,000 divided by 900 900 minus D. Are you happy? Yes, sir.
प्लस वीबी इक्वल has टू to 0. be equal to 0. So therefore मुझे VB कितनी मिली? चलो VB therefore is equal to ये तीनों की सम, तो ये -300 होगा, उस साइड में जाके +300 रहेगा. Are प्लस you with me? Plus yes sir 300 हाँ माइनस minus 90,000 90,000 divided by by 900. 900 D. minus D. Are you with me? Yes sir. और ये VB की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? VB मैक्सिमम या भी अरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 180. 180. तो VB maximum can approach to 180. Do you agree with me? तो 180 कैसे? दिखा अच्छा है ना? अच्छा हाँ रिजल्टेंट ही 180. ओके When each of the reactions is one, allowable value of each of the reaction is 180. ओके हाँ रिएक्शन इज 1. ओके सर यस सर. VB कितना हो सकता है? 180 हो सकता है. 180. हाँ, so VB max can be 180. तो अब मुझे बताओ क्या इसमें से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो? कैलकुलेट Yes कर sir. सकते हो? चलो D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो क्या होगा? 300 माइनस 90,000 divided by in bracket 900 minus alpha D, alpha bracket complete, alpha equal to 180. Shift solve, shift solve. So what is the value of D? I get D as 150. 1. Do you agree with me? Yes sir doing sir too. Yeah, please do it and confirm. Yes sir 150 आ रहा है. 150 आ रहा है. हाँ सही है ना? अब जरा मुझे बताओ D अगर इससे बढ़ गया तो ये रिएक्शन के ऊपर क्या होने वाला है? बताओ. If D सर VB कम increases होगा. beyond 150, then this denominator increases, this denominator decreases, Denominator sorry, denominator decreases means this quantity increases, that means increases. VB decreases. VB decreases. Yes. So 180 से कम. favorable value is for VB to be less than, for VB to be less than or equal to 180, I must have D greater than 150. 150. ग्रेटर देन इक्वल टू 150. जरा उल्टा लॉजिक अप्लाई करते हैं. देखो अगर D 150 से कम आया तो क्या होने वाला है? ये डिनोमिनेटर जो है वो घटने वाला है. डिनोमिनेटर घटा तो ये क्वांटिटी बढ़ने वाली है. हाँ ये क्वांटिटी बढ़ने वाली है. एम आई राइट? यस सर. ओके. ये क्वांटिटी बढ़ी तो रिएक्शन नहीं, क्या गड़बड़ हुई जरा देखो. सर 300 में से ज्यादा माइनस होगा. हाँ 300 माइनस 90,000 1 मिनट डिवाइडेड बाय 900 minus alpha x. Calculate. If x is 150, it is 180. Now if I increase the x 200, it becomes 170. Yes. So as I go on increasing the value of D, then the reaction starts falling down below 180. Falling down. 180. Are you with me? Yes. So therefore, I want D to be greater than 150. D to be greater than or equal to 150. Are you Yes, with me? Yes. और यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? यहाँ पे सही किया है क्या हमने? कहाँ पे सर? ऊपर D has to be greater than 400. 400. Yes sir. है ना? So for RA to remain within 180, क्या Yes, क्या sir. कंडीशन है? DA should be greater than 400. 400. And for VB to be less than 180, what is the condition? D should be greater than 150. Yes, D should be greater than. So what is the range in which you can have D? 150 to 400. 150 above, but at 400. Yes, it has to be 150 above, but From 400. so therefore what is the range? No. So then it will be 400 and above. D should be because- greater than 400 is the range. Yes. Range. Yes sir. Are you with me? Yes sir. This is the answer.
Are you with me? Yes, sir. Okay, where were we? Here. सही किया है ना, कुछ गड़बड़ नहीं की ना? एक बार Sir, चेक करो. हाँ बोलो. in the first one, d greater than or equal to 400. If we take 500, then I will get 225, which is greater than 180. हाँ, that's what I thought. We made a mistake. 1 minute. 90,000 divided by 900 minus alpha x. Calculate x is equal to 400, तो 180 आता है. Calculate x is equal to 450. I get it उल्टा हुआ शायद. d हाँ less than 400 ये चाहिए. हाँ सर, क्योंकि आपने बोला था कि कम होगा और हाँ, आपने yes, उल्टा साइन yes. लगाया था. लिखा आई लिखा थॉट उल्टा. So what is the हाँ range? D has to be between 150 to 400. 400. यस हाँ, सर. सर प्लीज तो करेक्ट दैट. 400 ही होगा ना? मतलब तो डी स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा ना सर? नहीं नहीं, D if D remains anywhere between 150, so D is greater than or equal to 150 हाँ यस सर, ग्रेटर देन mm इक्वल टू 150 एंड लेस and it देन has to be इक्वल टू less than or 400. equal to 400. इसके बीच में कहीं भी अगर हो तो both the reactions are going to remain within 180. ऐसे इसका मीनिंग. यस सर. हाँ Are you with me? थोड़ा सा यस थोड़ा थोड़ा सा यस समझने के लिए सर. डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड. किसी को इसमें कुछ यस डाउट? सर. नो सर, नो डाउट. Okay, so therefore that's how we found out the range. That this is problem number 26. Meanwhile, let us keep our tradition going. We will identify the system of forces. ये कौन से तरीके का system of force है? Look at FBD. So are lines of actions of all forces passing through a single point? No. नो सर. Do lines of actions of all forces lie in a single plane? Yes. And यस are सर. all non-zero forces? पहले तो पता नहीं था HB जीरो है कि नहीं. पहले हाँ सर. समेशन fx इक्वल टू 0 लगाने के बाद समझा कि HB जीरो है. Are you with यस me? सर. So यस we cannot categorize this force system as parallel force system because we हाँ never knew that HB was 0. Are you with me? यस सर. हाँ हाँ यस. So therefore ये कौन सा सिस्टम है? कोप्लेनर. कोप्लेनर तो है because हाँ line of actions of all these forces they fall in single plane, but it सिंगल is non-concurrent नॉन. because lines of actions of all the forces do not pass through single point. Are you with me? यस सर. और इतना ही नहीं, we cannot also categorize it as a parallel force system. पैरेलल फोर्सेस. नहीं Yes. कर सकते because HA was 0 is the wisdom that we got when we applied first equation of Yes, equilibrium. sir. हाँ, तो इसलिए ये सिस्टम इस तरीके का है. Now let us look at this problem. We are going to quickly solve this. Can you read this problem? चलो, read it. Yes, sir. हाँ. A 1,800 Newton load Q is applied to the pulley C, which can roll on the cable ACB. The pulley is held in position shown by the second cable CAD, which passes over the pulley A and supports the load P. Determine the tension in cable ABC and the magnitude of the load P. Okay, so you have to understand that there are two pulleys, one pulley at A, another pulley at C. This pulley A is fixed pulley, it cannot move, whereas pulley C is the movable pulley. Do you agree with me? Yes, sir. Yeah, and there are two strings attached. दो strings है. कौन से? ACB is one string and DAC is another string. Do you agree with me? Yes, sir. हाँ चलो, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट टेंशन इन केबल ACB एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड P. दोनों फाइंड आउट करना है. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो अब बताओ आप फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओगे? Sir, pulley C का. Correct, but in pulley C, P is not directly involved. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब क्या करेंगे? So therefore, first of all, अब जरा आर्ग्यूमेंट देखो कैसा है. ये सब दिमाग में चलेगा. आप बोल रहे हो वो सही है,
we are going to draw free body diagram of pulley C only. But उसके पहले मन ही मन में क्या करना है वो देखो. I am going to give cut to this AD here, and I am going to draw free body diagram of only this much portion of AD. तो इतने ही पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? दिस इज पोर्शन, दिस इज स्मॉल पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग एडी. इसके ऊपर ये फोर्स कितना है? P. Do you agree with me? Yes. And Yes. the remaining portion of string AD must be applying some tensile force T, which I am going to call it as TAD, tension in string AD. Are you with me? Yes. Yes. As this system is in equilibrium, even this portion is in equilibrium. So therefore, summation Fy must be equal to 0. Yes, sir. हाँ, तो समेशन Fy इक्वल टू 0 अगर आपने लगाया तो आपको क्या मिलेगा? दिस P मस्ट बी इक्वल टू TAD इन मैग्नीट्यूड. TAD. Yes, sir. हाँ, सो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? P जितना है. आर यू विथ मी? Yes. एंड इट इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. This तो pulley. therefore, So both sides पोर्शन AC में भी टेंशन कितना है? TAD. So P. हाँ, पोर्शन AC में भी टेंशन कितना है? P जितना. P. आर यू विथ मी? Yes. Yes. ये आपको पक्का समझना चाहिए. नाउ वी विल नाउ टेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली एट सी. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू? FBD of pulley C. So how do I draw the free body diagram? Free the body from all external agencies. I will have to show its weight, but its weight is not mentioned, so therefore it is negligible. Are you with me? Yes. I freed Yes. the pulley from earth. I have to show its weight, but its weight is negligible because it is not mentioned in the problem. What the poor soul can do if it is not mentioned? Are you with me? Yes, sir. Now Q is equal to 1800 Newton. That is external to the pulley. किसी external body ने ही पुली के ऊपर ये 1800 का फोर्स लगाया होगा. Yes, sir. So I am going to show that 1800 Newton here. Q is equal to 1800. Are you with me? Yes, sir. Yeah. Now there is going to be tension in string AC. Do you agree with me? Yes, sir. And there is going to be tension in string CB. CB. Yes, sir. So वो दोनों टेंशन सेम रहेंगे because that is the string Frictionless. that is Yes, passing over the frictionless pulley. तो इसके लिए उसके टेंशन सेम रहेंगे. Do you agree with me? Yes, sir. So as I have called this as T, I will call it as T1 and T1. Do you agree with me? Yes, sir. So T1 is what? T1 is nothing but tension in string AC. TAC. Are you with me? Yes, sir. And जो कि वो टेंशन है, therefore I have shown the arrow going away from the pulley. It is pulling the pulley. टेंशन है ना, Yes, तो पुल sir. करेगा. हाँ, tension. हाँ, cables anyway cannot have compression. केबल में अगर compression आ yes, sir. जाए तो वो slack हो जाते हैं. So there cannot Yes. be any compression. तो टेंशन ही होना है. Are you with me? Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? T1 ही. Because T1. T1 itself is the tension in string TCB. TC. Yes. Because ACB is a single string passing over a frictionless pulley. Are you with me? Yes. और उसके साथ साथ मुझे एक और फोर्स यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, which is parallel to this T1 and that is T1. equal to P. P. Yes, sir. अरे, that is अरे, 1 minute. That is equal to P. Pardon me for the poor diagram, but that is equal to P. Are you with me? Yes, sir. And now don't have any ambiguity. Why this tension also is not equal to T1? Reason is it is another string. Are you with Yes, me? sir. Though pulley is frictionless, it is another string. There is no obligation on that string that it should have the same tension as the ACB. Yes, sir. Therefore, this is P and T1. So what are the unknowns? Unknowns दो ही है. कौन से है? P and T1. Is this T1. free body diagram complete? No, because we have not shown the angles. Angles. हाँ. ये एंगल कितना है? 55 डिग्री. It is 25. और ये एंगल कितना है? 25. 25 डिग्री. Happy? Are you with me? Yes, sir.
And for equilibrium, we have to find out P and T1. So how do we go about it? Apply summation fx equal to 0. Chalo, quickly tell me the components. TCP के components बताओ. T1 cos 25 plus minus minus T1 T1 cos sin 55 55. Sorry. T1 cos 55. Right. yes and minus P cos 50 Minus P cos 55 is equal to 0. equal to 0. So therefore T1 take constant into bracket cos of 25 minus cos of 55. Are you with me? Yes sir, yes. Minus P cos 55 is equal to 0. Are you with me? Yes sir. ये हुआ इक्वेशन नंबर 1. What is equation number 2? Summation fy equal to 0. Fy is equal to 0. बोलो क्या होगा फिर? Sir 1800 T1 cos sorry sin minus 25 okay minus T1 sin 25 plus T1 sin 55 plus P sin 55. हाँ बोलो. Minus 1800 plus T1 sin 25 P sin P 55 sin 55 T1 sin 25 and T1 sin 55 sin T1 common into bracket sin 55 50 plus sin 25. sin 25. Do you agree with me? Yes sir. This must be equal to 0. This is the second equation. So if I simplify this, what do I get? I get T1 common into bracket sin 55 plus sin 25 sin 25. Are you with me? Yes sir. Plus P sin 55 equal to 0. This is equation number 2, not the earlier one. This is equation number 2. Now solve equation number 1 and 2 quickly. Yes. Mode, go to equation mode, number of unknowns 2, then cos 25 minus cos of 55. Ensure your calculator is in degree mode. Minus cos of 55. C1 is 0. A2 is sin 55 plus sin 25. B2 is sin 25. And I'm sorry, this is my 1800, not 0. This has to be 1800. 1800 goes on the right hand side. Equal to 1800. हाँ चलो बोलो कितना आया? Are you getting T1 equal to 1210.5? Are you getting this? Yeah. Yes sir. Let me cross check. Yeah, please cross check. And P is equal to 702.23 Newton. Yes sir. बराबर. सही है? Yes. These are the values that we get. Now let us solve the last problem where we are now enriching our concepts by a new theorem, and that is called as Lami's theorem. But I am not going to straight away tell you the statement of Lami's theorem. Instead of that, let us read the problem first. Okay, so read it. Knowing that portion AC and BC of cable ACB must be equal, determine the shortest length of cable that can be used to support the load shown if the tension in the cable is not exceeding 870 Newton. हाँ, तो ग्राफ क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज ग्राफ होनी चाहिए कि कौन से भी पोर्शन में टेंशन 870 न्यूटन से आगे नहीं होना चाहिए केबल. Are you with me? Yes. Then Yes, second thing that needs to be grasped is
AC is equal to CB, Yes, sir. ऐसे दिया है. Are you with me? Yes. और पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. सो लेंथ कैसे बदल सकता है? आई विल बी एबल टू मेंटेन AC इक्वल टू CB बाय डूइंग दिस. Yes, sir. Are you with me? So in fact, all the points that lie on this line is a locus of points which are equidistant from A and B. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. So कितना लेंथ होना चाहिए such that the tension in the string does not exceed 870? ऐसे क्वेश्चन पूछा है. Are you with me? Yes, sir. हाँ, चलो अब मुझे बताओ, जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आते जाएगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? सर नीचे आते जाएगा उससे टेंशन बढ़ेगा सर. हाँ चलो. सो मीन्स आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस राइट नाउ, वी विल सी व्हाट इज द रिजल्ट. तो अब जरा मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना है? दिस एंगल, इफ आई कॉल इट एज थीटा, इज दिस एंगल आल्सो थीटा? Yes, बेस sir. एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए. डू यू एग्री विथ मी? सो नाउ व्हाट Yes, इज sir. दिस एंगल? हाउ मच इज दिस एंगल? 180 minus 2 theta. 180 minus 2 theta. So this angle becomes 180 minus 2 theta. अब free body diagram किसका बनाना है? I am going to draw now free body diagram of this hanging point. Point C. Yes, sir. Are you with me? So point का Yes. free body diagram नहीं बना सकते. इसका मतलब है we are going to draw free body diagram of this small portion Small around portion hanging of point C. C. Are you with Yes, me? sir. So किसका free body diagram बनाना है? FBD of portion of a string. अनफॉर्चुनेटली सारे बुक्स में पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बोलते हैं, बट वो दैट इज नॉनसेंस, बिकॉज सी इज पॉइंट. पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं, पॉइंट इज कुछ भी नथिंग. नहीं. तो ऐसे उसका कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? आर यू विथ मी? सो देयरफॉर Yes, sir. वी आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लोज टू सी. डू यू एग्री विथ मी? Yes. इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं. एंड नाउ लेट मी ड्रॉ दैट फ्री बॉडी डायग्राम. कैसे दिखेगा फ्री बॉडी डायग्राम बताओ? सो आई हैव शोन दैट स्मॉल पोर्शन हियर. देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं. दिस इज द स्मॉल Sir, पोर्शन. V. Yes, sir. हाँ, दिस इज पॉइंट सी. आर यू विथ मी? Yes, sir. इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है? फ्री इट फ्रॉम अर्थ. That small portion of the Yes. string is going to have negligible weight, so I am not going to show that. But it is Yes, acted upon by a force of 200 Newton by another 200 body. Newton. Yes, sir. 1200 Newton. So वो दिखाया. And the tension in this string TAC and TCB, is it going to be equal or different? That is the question that I am going to ask. Sir, tension both will be equal, no? Why? You are invoking No, symmetry. it's not. Yes, sir. It's जो कि वो symmetric है, therefore symmetric. हाँ. लेकिन उससे अच्छा आर्ग्यूमेंट कौन सा है जरा देखो. Means it is not mandatory that we should have this understanding. It can be proven by applying equations as well. But जरा यहाँ पे देखो, ये टेंशन है ना T, इसको अगर हमने T1 बोला और इसको T2 बोला, are you with me? तो ये एंगल तो Yes, sir. थीटा है. Yes, sir. If I take summation fx is equal to 0, T1 cos theta and T2 equal sin हो theta, जाएगा. they must cancel each other. तो cos theta They'll कैंसिल cancel. है, तो T1 और T2 इक्वल होंगे. ये दिमाग में चल Equal रहा है. होंगे. Yes, अरे sir. नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, ऐसे नहीं. बट टू बिगिन विथ, इन वन ऑफ द सॉल्यूशंस, लेट अस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. कोई फर्क नहीं पड़ता. आर यू विथ मी? सो आई विल कॉल Yes, sir. दिस एज T and T, these two tensions. Are you with me? Yes, sir. ओके. तो अब जरा देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना है. एट ए पॉइंट, सो इज इट ए कंकरेंट फोर्स सिस्टम? Yes, sir. हाँ. तो अब जरा देखो, हम जो लैमीज थ्योरम सीखने वाले हैं, डाइग्रेस है, उस लैमीज थ्योरम में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखना चाहिए? तो सारे फोर्सेस कंकरेंट होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है. आर यू विथ मी? Yes, sir. आर दे कोप्लेनर फोर्सेस? Yes, sir. हाँ, तो कोप्लेनर भी होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है. आर यू विथ मी? Yes, sir. तो इफ यू वेयर टू अप्लाई लैमीज थ्योरम, कंडीशंस देखो क्या क्या है. बुक में डायरेक्टली थ्योरी जैसे दिया होगा वैसे मैं नहीं करने वाला हूं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस हियर.
क्या होना चाहिए? कोप्लेनर होने चाहिए, एफबीडी के सारे फोर्सेस कंकरेंट होने चाहिए। आर यू विथ मी? Yes, sir. नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं चलेंगे। Yes, sir. आर यू विथ मी? Yes, sir. और तीसरी चीज, सिर्फ 3 होने चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम में ओनली 3 फोर्सेस। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, अगर ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया है तो लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल है। आर यू विथ मी? Yes, sir. एंड व्हाट इज द लैमिस थ्योरम? मैं सबसे लास्ट में लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट बताने वाला हूं, बट वी विल अप्लाई इट फास्ट। सो व्हाट इज दिस एंगल? चलो, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये बताओ मुझे। हाउ मच इज दिस एंगल? So, देखो, देखो, दिस एंगल इज थीटा, सो जेड एंगल के हिसाब से ये एंगल भी थीटा, theta. Yes, sir. एंड And देन that दिस एंगल विल 90 बिकम plus 90 theta. प्लस थीटा। सो दिस इज 90 प्लस थीटा, It will be 90 plus theta. 90 प्लस थीटा। आर यू विथ मी? Yes. हाँ, अब जरा देखो, जब हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जितना हो सके उतना सारे फोर्सेस को उस पॉइंट के तरफ या तो टेंसाइल होना चाहिए या तो कंप्रेसिव होना चाहिए। आर यू विथ मी? इसी तरीके Yes, से हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनता है, एक फोर्स, दूसरा फोर्स और तीसरा फोर्स, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको दो तरीके हैं। सॉरी, तीसरा फोर्स ऐसे नहीं दिखाते, लेकिन लेट अस से थर्ड फोर्स इज दिस वे। तो ये 3 फोर्सेस ऐसे अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम है तो इसको आप कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो? दो चॉइसेस है। मेक एवरी फोर्स टू बी टेंसाइल। तो ये पहले वाला तो टेंसाइल है, पुलिंग द पॉइंट। डू यू एग्री विथ मी? yes, sir. ये दूसरा वाला फोर्स है, उसको इधर लेके जाओ। आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, और फिर और नीचे तीसरे वाले वाले को फोर्स ऊपर को ले इधर लेके जाओ, Yes. एंड देन फाइंड आउट दिस एंगल। Angles. ये कर सकते हो, या फिर तीनों फोर्सेस को Vice versa. वाइस वर्सा, Compressive. मतलब इसको ऊपर लेके जाओ और इसको ऐसे करो, एंड देन फाइंड आउट दिस एंगल्स एंड देन अप्लाई लैमिस थ्योरम। कैसे भी करो। हाँ, आर यू विथ मी? Yes, sir. ये करने का एडवांटेज क्या है? तो लैमिस थ्योरम में सारे फोर्सेस पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो, मतलब इफ, ओके, वो केस हम बाद में लेंगे, बट ऐसा करो, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूं। आर यू विथ मी? Yes, sir. Okay. And then what does Lami's theorem say? Then Lami's theorem say that magnitude of one force, तो ये T वाला force, divided by angle between other two forces on the opposite side of T. देखो क्या बोल रहा हूं। Let me consider force under consideration as this T. ये T वाला force मैंने consider किया। Are you with me? Yes, sir. हाँ, तो वो छोड़ के बाकी दो forces कौन से है? 1200 and T. Are you with me? Yes, sir. ये टी छोड़ के बाकी दो फोर्सेस कौन से हैं? ये 1200 और ये टी वाला। 1200. उनके बीच का एंगल देखो, लेकिन कौन सा एंगल? जिस साइड में ये टी नहीं है वो एंगल। आर यू विथ मी? Yes, sir. तो वो कितना है? 90 प्लस थीटा। उसका साइन आप लो, टी अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। आर यू विथ मी? Yes. हाँ, दिस हैज टू बी इक्वल टू दूसरा फोर्स, ये 1200 वाला फोर्स। 1200 छोड़ के बाकी दो फोर्सेस कौन से है? टी एंड टी। उसका T. एंगल, लेकिन कौन से साइड का? जिस साइड में 1200 नहीं है वो वाला, मतलब ये वाला एंगल। ये कितना Yes, है? sir. 180 So, माइनस 180 minus 2 theta. 2 थीटा। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. दिस इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। आर यू विथ मी? Yes, दिस sir. मस्ट बी इक्वल टू तीसरा फोर्स। तीसरा फोर्स कौन सा है? ये टी डिवाइडेड बाय 1200 और दूसरा टी, इसके बीच का एंगल, लेकिन कौन सा? जिस साइड में टी नहीं है वो। आर यू विथ मी? Yes, sir. तो वो एंगल बन जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 minus theta. आर यू विथ मी? हाँ, Yes, sir. दिस हैज टू बी वैलिड बाय लैमिस थ्योरम। ये इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैमिस थ्योरम। आर यू विथ मी? Yes, sir.
समझो अगर आपने पहले इसको T1 लिया होता और T2 लिया होता, तो व्हेन यू इक्वेट द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यू वुड हैव गॉट T1 इक्वल टू T2. Yes, sir. सोचने की जरूरत नहीं है. आर यू विथ मी? अगर मैंने ये T1 लिया होता और ये T2 लिया होता, देन आई वुड हैव गॉट T1 1 equal to T2. so by equating first and third term I get T1 equal to T2. T2. आर यू विथ मी? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही लिखते हैं. T1 इक्वल टू T2 मिल गया. हाँ, नाउ therefore can I express this T in terms of theta? हाँ, कर सकता हूं. या तो पहला और दूसरा आइडेंटिटी इक्वेट करो या फिर दूसरा और तीसरा इक्वेट करो. सो यू विल गेट T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T इक्वल टू कितना मिला देखो 1200 आर यू विथ मी इनटू Yes, sir. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा साइन ऑफ Yes, sir. 90 plus theta divided by sine of Sine of 180 minus 2 theta. 180 minus 2. Are you with me? Are you with me? Yes, sir. Yes. ये मिल गया ना? This is the value of T. And अब क्या बोला गया है? Tension in the cable should not exceed 870. Yes, sir. हाँ, तो So ये T T is ज्यादा equal से to ज्यादा 870. कितना हो सकता है? 870 हो सकता है. 870. Are you with me? So can you now get Yes. theta easily? Yes, sir. So we have to obtain this theta. ये हम कल करेंगे theta. Let me now summarize Lami's theorem. ये theta कल एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रॉब्लम. But Lami's theorem का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं. What is Lami's theorem statement? If the body is under equilibrium under the action of only three non-collinear, concurrent and coplanar forces. देखो, if a body is under equilibrium under the action of only three non-collinear, concurrent and coplanar forces, then we can write down the mathematical statement of Lami's theorem as T1 upon sin theta is equal to what not. वो सब वो स्टेटमेंट तो आपको समझा. Are you with me? Yes, sir. तो कंडीशंस क्या है? बॉडी मस्ट बी अंडर इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ concurrent non-collinear coplanar system of forces and forces only should be 3. तीन ही Three. फोर्सेस होने चाहिए. आर यू विथ मी? तो ही लिख Yes, sir. सकते. अब जरा एक बार सिर्फ इसका साइन कन्वेंशन में आपको बताऊंगा एंड देन वी विल स्टॉप. सो इफ वी अरेंज ऑल द फोर्सेस व्हिच आर टेंसाइल इन नेचर, आर यू विथ मी? Yes, sir. तो अगर आपको T2 का साइन निगेटिव मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो कंप्रेसिव है at Yes, that sir. point. Are you with me? सिमिलरली अगर आपने ये सारे फोर्सेस कॉम्प्रेसिव जैसे अरेंज किए होते और फिर लेमिस थ्योरम लगाया होता तो पॉजिटिव साइन वुड हैव मेंट पॉजिटिव कॉम्प्रेशन. Yes, sir. हाँ, तो ये साइन कन्वेंशन याद रखो. इसके लेमिस थ्योरम के ऊपर और एक दो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट द डिस्कशन ऑन इक्विलिब्रियम एंड वी विल मार्च अहेड with the concept of with the concept of application of equilibrium to beams, particularly to beams, and then we will move ahead with centroids. Are you with me? Yes, sir. So this is the next part. So Lami's theorem का statement एक बार फिर से बताता हूँ. If the body is under equilibrium with non-collinear concurrent coplanar force system and only three forces are maintaining the equilibrium, then and then only we can apply Lami's theorem. Are you with me? Yes, sir. चलो, तो यही प्रॉब्लम कल हम ट्रेडिशनल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी सॉल्व करेंगे. लेट अस स्टॉप हियर टुडे. राइट डाउन योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स. अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग नाउ.